Hi friends, how are you doing today? And thanks for joining me for today's video in which I'm going to share sample answer of one of the latest cue cards that the examiner may ask you if you are going to attempt the IELTS exam shortly. Talk about a businessman or a business person that you admire. The examiner can ask you this cue card and the cues can be who this person is, how do you know about this person, what kind of business he has, and why you admire this businessman. Well, ideas can be hundreds because there are hundreds and hundreds of successful businessmen that we know, and as you know, in every video I share the idea behind the cue card in the regional language. That's what I'm going to do now, and then I will share the sample answer in the later half of this video. Before we move ahead, I request you to please subscribe my channel and help me to grow more. Always mention in the comment section what other cue cards you want me to prepare for you, and never forget to press the like button as well. Well, अब बात करें हम एक फेमस बिजनेसमैन की, तो आप किसी के बारे में भी चूज कर सकते हैं, लेकिन अभी देखिए टाइम चल रहा है फार्मर प्रोटेस्ट का, तो अंबानी अडानी का नाम लेने का तो कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर मेरे पास एक वैसे भी काफ़ी टाइम पहले एक आर्टिकल आया था, मैंने खुद रीड किया, और काफ़ी टाइम पहले ये सेम क्यू कार्ड भी पूछा जा रहा था, तभी मैंने क्लास में यही कराया था। रमेश बाबू करके एक साउथ इंडिया में बिजनेसमैन है, अब है नहीं है कि पता नहीं, हाइपोथेटिकल किसी ने मेरे साथ वैसे ही शेयर कर दिया, मैंने ज़्यादा इन्वेस्टिगेट भी नहीं किया, लेकिन स्टोरी बड़ी मज़ेदार है। जब ये यंग एज में था तो इसके शायद पेरेंट्स की डेथ हो गई, अब ज़्यादा इसके पास करने को कुछ था नहीं, एजुकेशन भी नहीं थी, स्कूल कंटिन्यू ही कर पाए, जिसकी वजह से ही स्टार्टेड गिविंग हेयर कट टू द पीपल। 2 रुपये पर हेयर कट देना स्टार्ट किया और थोड़े थोड़े पैसे जमा करने शुरू किए। विटी थे, इंटेलिजेंट थे, एंड फॉर दैट रीज़न ही सेव्ड सम अमाउंट ऑफ मनी, एंड विद दैट मनी उसने सबसे पहला अपना एक सेकेंड हैंड कार बाय किया और कार रेंटल बिजनेस में जंप कर गया। बट एट द सेम टाइम या साइमल्टेनियसली अपना वो 2 रुपये वाला हेयर कट बिजनेस कंटिन्यू रखा। स्लोली एंड स्टेडली बिजनेस ग्रो किया, एम्पायर बढ़ता गया, और टुडे ही इज़ अ बिलियनर, एंड इन हिज फ्लीट देयर आर हंड्रेड्स ऑफ कार्स, नॉर्मल रेंटल कार्स, सिर्फ वही हमारी डिज़ायर या स्विफ्ट यहीं तक नहीं है, रोल्स रॉयस तक, मज़राटी तक, ये सारी कारें भी उनके फ्लीट में हैं, एंड ही हैज़ मेनी अदर बिजनेसेस टुडे एज वेल। बट द बेस्ट थिंग इज़ दैट ये बंदा इतना डाउन टू अर्थ है कि आज भी ये अपने सैलून में जाके लोगों को 2 रुपये में हेयर कट देता है। दिस इज़ समथिंग दैट मेक्स हिम द पर्सन दैट यू एडमायर। ना एक बिजनेसमैन है तो उसके साथ आप और भी चीज़ें ऐड करें कि सोसाइटी के लिए बहुत कुछ करते हैं, बहुत सारी डोनेशंस देते हैं, जो पीपल इन नीड हैं उनकी हेल्प करते हैं, फिर सोशल मीडिया पर उनको फॉलो करना क्यों भी होगा कि आपको उसके बारे में कैसे पता, तो यू कैन से दैट आई रेड अ बायोग्राफी ऑफ दिस पर्सन, या आपने उस पर एक बुक या आर्टिकल रीड किया और आप उससे सोशल मीडिया पर भी फॉलो करते हैं टू गेट टू नो व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग ऑन इन हिज लाइफ, या उसके जो नए नए इनोवेटिव आइडियाज़ या बिजनेस प्लान्स हैं उसके बारे में भी वो शेयर करते हैं। सो अगर इन सारी चीज़ों को आप इनकैप्सुलेट कर लेंगे, आसानी से 1 या 2 मिनट का क्यू कार्ड बन जाएगा, और इसका रिटन वर्जन आपको स्पीकिंग बूस्टर में भी मिल सकता है, जो मेरी बुक ऑल टाइम अवेलेबल रहती है आइल्स कोचिंग एप्लीकेशन पर। कैसे इसे बाय कर सकते हैं, आई विल शो यू इन द लेटर हाफ ऑफ द वीडियो। लेट्स चेक आउट द सैंपल। Well, there are many successful businessmen, and I often read the biographies and watch biopics of such icons. Recently, I read an article about a famous South Indian businessman, Ramesh Babu, and now he is the one that I admire the most. Actually, he had a very humble start. He lost his parents at an early age and couldn't go to school. For survival, he started to give haircuts to people at 2 rupees only. He was quite intelligent and witty from early age. So after saving money from this small venture, he purchased his first second-hand car and started a car rental business. Along with his new business, he continued to give haircuts. Slowly and steadily, his business grew, and today he is a billionaire.
He has hundreds of cars in his fleet, and that include expensive cars like Maserati and Rolls-Royce, and it is hard to believe that he still gives haircut for 2 rupees at his salon, which shows how humble he is. Although he lives life king size, he also donates a lot of money to help people in need. He has helped many people to set up their small businesses to earn their livelihood. I admire this person because he contributes greatly towards society and he is a true legend. Now I regularly follow him on social media, especially Twitter, where he shares his innovative ideas and motivate youngsters to have their own startups. I wish I too become a successful businessman like Mr. Ramesh Babu. First of all, download Ielts coaching application from Google Play Store. If you are an Apple user, then download My Institute app and enter code IELTS IELTS. On home page, click on Store and choose Speaking Booster. Click in Buy Now and pay online to unlock the book for next 6 months. And that's it, you're done.